Hello everyone. Today I am going to start a new lecture series which is based on hit and mass transfer, and this will be the previous year questions of GATE, IES and IAS. Okay, so those who are from mechanical engineering background and those who study thermal engineering, for them, I will not say thermal engineering, but thermal subjects. Okay, whoever is following, for them, like thermodynamics and heat transfer. Sometimes it is like compulsory kind of courses for few branches apart from mechanical. Okay, so for them this is the new lecture series. Here I will cover approx 25 to 30 previous year questions that will be MCQs. Okay, so those who are targeting like these exam, GATE, engineering services, all civil services. Okay, especially like optional, because earlier in IS also in prelims mechanical was there, so those questions will be there. From 2010 it has been stopped, so after 2010 you will not find question from civil services. Okay, we'll see the first topic, that is mode of heat transfer. With this we'll start and we'll go topic wise. Okay, this is about myself. I did master from IIT Bombay and I'm the former assistant professor in the Department of Mechanical Engineering, and apart from that I have also taught in foreign university. Okay, so let's see, I will start today's lecture, which will be completely based on heat transfer. Okay, and also I did for fluid mechanics, that is going on, and strength of material, that is going on, and material science is already done, and maths question is also I'm doing previous year in this channel, so you can follow those playlist as well. And also I will complete whole mechanical engineering subject wise complete lecture series, previous year questions, everything. Okay, in this channel. Since this is the first lecture, so I have given a little bit introduction kind of thing, but maybe from next class onwards I will directly start the questions. Okay, so let's see today's question. Okay, so the first question, actually each chapter I will first do the GATE question, then engineering services question, and then the civil services question. This will be the way of doing. Okay, so accordingly you will find first GATE questions. Okay, so you can see here Fourier law of heat conduction. Okay, question from this topic. This question came in GATE 1996. For a given heat flow and for the same thickness, the temperature drop across the material will be maximum for. Okay, so they are asking. Okay, the temperature drop across material will be maximum for copper, steel, glass wool, refractory brick. See that, you know that the Fourier law of conduction, that is Q is equal to minus Ka dt by dx. Okay, so accordingly we can simplify, so we can write like Q into dx by A is equal to minus Ka dt by dx. So this is K dt is constant, so we can say that this dt is inversely proportional to the thermal conductivity. So if K is higher, temperature will be lower. Okay, or vice versa, if temperature is higher, okay, if temperature is higher, then K will be lower. So as per this, if we see the based on this option, okay, so glass wool will be the maximum temperature drop. Okay, so the lesser the K value, higher will be the temperature. So for this, K will be lowest, so temperature drop will be maximum. Okay, but for these three, K will be higher, so and then temperature drop will be lesser, if as comparison to this. Okay, so the answer is C. So I hope you got the idea. So we need to just remember temperature is inversely proportional to the thermal conductivity. So based on thermal conductivity, you have to decide, okay, if 4 or 5 materials is given, so you have to see which material is more, which material thermal conductivity is more,
ओके जिसका ज़्यादा होगा उसमें टेम्परेचर ड्रॉप कम होगा और वाइस वर्सा. ओके सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, सो प्लीज रिमेंबर. Okay, next question. This is like GATE 2008 question. Okay, is looking complicated, but is not very complicated. Okay, we'll read here. Steady two-dimensional heat conduction take place in the body shown in figure below. You can see here, this is the figure. So this is surface P at 100 degrees centigrade and surface Q at 0 degrees centigrade. The normal thermal gradient over surface P and Q considered to be uniform. Find the temperature gradient del T by del X at surface Q. Okay, so at here it is del T by del X, which is equal to 10 K by M. Okay, this value is also given, that is 10 Kelvin per minute. Okay, so this is temperature, unit is Kelvin and distance is meter, so that they have given. Surface P and Q are maintained at constant temperature as shown in figure. Okay, so this point P and Q is maintained at constant temperature, okay, in the figure, while the remaining part of the bond is insulated. Okay, so at this surface temperature is like constant, okay, but rest body is insulated. Okay, so the body has constant thermal conductivity of 0.1 watt per meter Kelvin. Okay, so this body has constant thermal conductivity of 0.1 watt per meter Kelvin. The value of del T by del X and del T by del Y at the surface P. Okay, so this is at this del T by del X is given at Q. Okay, but they are asking del T by del X value and del T by del Y value at surface P. Okay, Q पे दिया हुआ है, P पे पूछ रहा है. Okay, so nothing, कुछ नहीं करना हमें, we have to just use Fourier law of conduction. Okay, so at entry, okay, at entry and exit, we have to apply the Fourier law of conduction, that is minus Ka dt by dx. Okay, so accordingly this will be the equation. Okay, so 2b dt by dx is equal to 1 into b dt by dy. Okay, so if you use this and as per the given condition, if you use these given conditions, okay, so you will get del T by del X will be 0 and del T by del Y will be 20 Kelvin per minute. Okay, you can solve with your own, it's like very simple question, so you will get D. Okay, okay, next question. Again, this is GATE 98 question. A ball of mass 1 kg and specific heat 0.4 kilojoule per kg is at a temperature of 60 degrees centigrade. It is dropped into 1 kg water at 20 degrees centigrade. Okay? The final स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ वाटर. ठीक है, कुछ नहीं, हमें एनर्जी बैलेंस करना और कुछ भी नहीं. ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है. विल गेट द फाइनल स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ वाटर. ओके, सो सी सो व्हाट आई हैव टू डू, हीट लॉस बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर. जैसे मान लो कोल्ड बॉडी, उसको आप अभी देखिए इसमें स्टील बॉल है, तो ये ठंडा है, इसको हम लोग हॉट वाटर में डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, जो हॉट वाटर है वो अपना हीट इसमें ट्रांसफर करेगा. ओके, सो दैट एनर्जी बैलेंस वी हैव टू मेंटेन. सो हीट लॉस बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी. ओके, अब वी नो दैट इज MC डेल्टा T. सो फॉर हॉट बॉडी, ओके, MH CP. ओके, specific heat for hot body, so TH minus TF, okay, initial minus final is equal to cold के लिए हमें करना है. ओके, MC देखिए एक से लूज हो रहा है, एक में गेन हो रहा है. ओके, सो वी हैव टू पुट माइनस साइन, सो दैट्स व्हाई हियर वी कैन सी हियर, सो
स्पेसिफिक हीट ऑफ कोट माइनस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है, एक में लॉस हो रहा है एक में गेन हो रहा है, so we have to put minus sign. Okay, so that's why here is like TF minus TC and here is TH minus TC. Okay, so don't confuse here. So MH is 1, okay, MCP hot for given is 0.4, TH is given 60, okay, and T final that we have to calculate. ठीक है, मान लो कि जो final temperature steady state temperature is TF, that we don't know. ओके, देन अगेन MC इज 1. देखिए M की वैल्यू अगर नहीं दी हुई, इसमें 1 kg दिया हुआ है, अगर मान लेते नहीं दिया हो तो वी हैव टू कंसिडर पर kg. ओके, एंड फॉर वाटर इट इज़ 4.2, यू नो दैट. ओके, देखिए यहाँ पे जैसे हमें इक्वेट करना है किलो जूल पर kg, अगर मान लेते हैं हम इंडिविजुअल कभी यूज़ कर रहे हैं Q इज इक्वल टू MCP डेल्टा T, तो जब तब CP की वैल्यू जब आप रखते हो तो उसमें 10⁻³ मल्टीप्लाई करिएगा. यहाँ पे अगर आप रखते भी हो तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, बट अगर इंडिविजुअल हम हीट ट्रांसफर निकाल दें, सो देयर वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्चुअली, मतलब जूल पर kg में रखना है, किलो जूल में नहीं रखना है, बस ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, ठीक है. अगेन TF वी डोंट नो, सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड TC इज 20 degree centigrade. Okay, so you have to simplify this. If you simplify this, you will get TF is equal to 13.5 degree centigrade. Okay, so the answer is A. देखिए इसमें आंसर इज दिस. ओके, लेकिन इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा, बट क्लोजेस्ट नियरेस्ट कौन सा A, तो हमें A कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, सो द आंसर इज A. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल. ठीक है, टॉपिक चेंज हो रहा है, उसी तरीके से इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी होगा, IAS में भी होगा, टॉपिक वाइज. ओके, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है, किसका किसका कितना क्या क्या होता है. प्योर वाटर, लिक्विड वाटर, सैचुरेटेड वेपर, और प्योर एल्यूमिनियम कैन बी प्योर एल्यूमिनियम. ओके, सो दिस वी हैव टू अरेंज. सी, सबसे पहले होगा प्योर एल्यूमिनियम, उसके बाद प्योर आयरन, उसके बाद लिक्विड वाटर, उसके बाद हमारा होगा सैचुरेटेड वेपर. आंसर इज सी. ठीक है, अब अरेंज कर लीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज का स्टार्ट हो गया, गेट के क्वेश्चन उतने ही थे. ओके, विल सी हियर a copper block and an air mass block having similar dimension are subjected to symmetrical heat transfer from one phase of each block. The other phase of the block will be reaching to the same temperature at a rate, okay, faster in air block, faster in copper block. Equal air as well as copper block cannot be predicted within the given information. ठीक है, तो ये this is the condition. So actually in this case, see, faster will be in copper block. Okay, answer is B. आप इसको एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, बट आंसर इज B. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूरियर लॉ आ गया. अगेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फूरियर हीट कंडक्शन इक्वेशन Q इज इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx. ओके, अब इसमें कौन कौन सा करेक्ट है. स्टडी स्टेट कंडीशन, देखिए इसकी जो हम फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यूज करते हैं उसके लिए कंडीशन पूछ रहा है, किस किस कब कब यूज कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस. कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिफॉर्म टेम्परेचर इन द वॉल सरफेस, वन डायमेंशनल हीट फ्लो. ओके, सो विल सी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. देखिए ये चीज़ एक्चुअली में गलत होता है. ठीक है, कांस्टेंट नहीं, हम अगर मान लेते हैं कि जो K की वैल्यू है, इवन इट इज़ वैरिंग विद X, ठीक है, हम इसको यहाँ पे रख के इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो वेरिएबल कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी एप्लीकेबल होता है, इज़ नॉट लाइक फॉर कांस्टेंट.
वो हम एक अजम्पशन मानते हैं कि ठीक है कांस्टेंट होगा, बट इज नॉट लाइक इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, आप कोई भी बुक उठा लो हीट ट्रांसफर का, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें की इज नॉट कांस्टेंट बट स्टिल दे आर यूजिंग फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। ओके, जैसे आप आर के राजपूत करके एक बुक होती है, उसमें यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चन वेयर k is not constant. It is a function of, like if it is plane slab, it will be the function of x. If it is cylinder, it will be, again it will be the function of radius. Even for hollow sphere, it will be the function of radius. So it's not like constant. हाँ, हम मानते हैं कई बार it is constant. Okay, so steady state is correct. Uniform temperature at wall surface is correct. One dimensional heat flow is correct. The answer is D. Next question, फिर से simple question है. A plain wall is 25 centimeter thick with an area of 1 meter square and has a thermal conductivity of 0.5 watt per meter Kelvin if temperature difference of 60 degree centigrade is imposed across it. What is the heat flow? कुछ नहीं, इसमें हमसे Q की वैल्यू पूछ रहा है. वी हैव टू यूज फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन. ओके, सो दिस इज द फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन, दैट इज Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स. ठीक है, इसमें देखिए माइनस की जरूरत नहीं है, डी टी बाई डी एक्स विल टेक केयर ऑफ दैट. सो K इज गिवन, X is given, okay, dx is given, dt is given, and area is given. Just put all the value here, you'll get 120 watt. The answer is A. Next question, and I think last question for this lecture. See, a large concrete slab 1 meter thick has one dimensional temperature distribution. ठीक है, देखिए टेम्परेचर को vary किया है with respect to x. Okay, they are considering slab where T is temperature and x is the distance from one face towards other face of wall. If the slab material has thermal conductivity of 2 into 10 minus 3 meter square per hour, what is the rate of change of temperature at the other face of the wall? ठीक है, इसमें थर्मल डिफ्यूजिविटी दिया हुआ है दिस मच. ओके, आई थिंक आई हैव रेड थर्मल कंडक्टिविटी, तो सॉरी फॉर दैट, इट इज थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा. ओके, सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, विल सी दैट. देखिए यहाँ पे तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट मैं हीट ट्रांसफर का जब कंप्लीट लेक्चर सीरीज करूँगी वहाँ पे आई विल डराइव दिस इक्वेशन. ओके, दिस इज़ फॉर एक्चुअली प्लेन स्लैब, जिसमें आप मान लेते हो सिर्फ वन डायमेंशनल है. ठीक है, दिस इज़ फॉर वन डायमेंशनल. ठीक है, अगर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल होगा तो यहाँ पे प्लस डेल टी बाई डेल टू टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू टी बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल्टा. ठीक है, बट वन डायमेंशनल बोला है तो y और z वाले 0 हो जाएगा. विल गेट फॉर प्लेन स्लैब डेल टू टी बाई डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल्टा. दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन. ठीक है, ये हमें यूज़ करना है बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. सो दिस एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट डेल टी बाई डेल्टा. अब हमें देखिए टी की वैल्यू दी हुई है दिस, इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करो और उसके जगह एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दो. ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन. एक बार आप पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करो, यू विल गेट -10 प्लस 40x प्लस 30x स्क्वायर. इसके बाद आप दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करो, यू विल गेट 40 प्लस 60x. अब यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो. ओके, यू विल गेट 40 प्लस 60, दैट इज लाइक 100. ओके, नाउ अल्फा इज गिवन. This is meter square per hour, 2 into 10 minus 3 meter square per hour. So यहाँ पे देखिए आंसर आवर्स में दिया हुआ है, so no need to convert this unit. Now you put del 2 by del x square is 100. Okay, and alpha is 1 by alpha.
ओके, सो इसको एक्चुअली इसमें यहाँ पे इधर लेके आया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो डेल टी बाई डेल टाउ इज 2 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ये 100 है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, गेट 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। सो द आंसर इज बी, ठीक है। सो द आंसर इज बी। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, दिस इज आवर गवर्निंग इक्वेशन। अब इसमें आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद उसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद आप सॉल्व करो डेल 2 बाई डेल टी की वैल्यू। ओके, दैट इज दे आर आस्किंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो द आंसर इज बी। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट। ठीक है, देखिए ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है, बट ये क्वेश्चन गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में ऐसा आ सकता है, स्पेशली फॉर मे बी 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए तो फॉर श्योर, और 2 मार्क्स में मुझे थोड़ा डाउट है कि 2 नंबर में दे सकता है कि नहीं, बट 1 नंबर में तो ये आपको मिल सकता है। नॉट दिस बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, आई हैव सीन मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टाइप। ओके, जिसमें डिफ्रेंशिएट वगैरह करना पड़ता है, फिर किसी इक्वेशन में जाके पुट करना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन फॉर्मूला टू फॉर्मूला दे जनरली आस्क। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज important. Okay, so this is the end of the first lecture of this. This will continue like this. We'll see more question and we'll try to finish heat transfer previous question from GEAT, engineering services and civil services.